In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, today's once again, we're going to go through something about reductions. Reductions, we have given you the introduction of reductions, what they are all about, and reductions are also known as contractions, or contractions, though the reduced form, contracted form, short forms which are used in day-to-day language, in spoken English in particular. हमारे पास आज के जो keywords हैं, could have, इसको बोलते हैं could have, could have, all right, and might have, and the next one is number 3 is should have, all right. Number 4 is must have, that's great. और लास्ट आज के जो कॉन्ट्रैक्ट रिडक्शन है would have. Now we have also written some examples of these reductions. We have used, इनको हमने इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो could have, could have, और इसका हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंस है you could have told me yesterday. आपने देखना है could have के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, might have के बाद थर्ड फॉर्म, should have के बाद थर्ड फॉर्म, must have के बाद थर्ड फॉर्म, और would have के बाद भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं. इन आपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं, इनके साथ आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे have के बाद. इनके बाद आप have और फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. इनका मीनिंग क्या बनेगा हम इनको साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे. तो could have सकता था की सेंस देता है. could have क्या सेंस देता है जी? सकता था. और you could have told me yesterday. आप मुझे कल बता सकते थे. You could have told me yesterday. आप मुझे कल बता सकते थे. Now let's talk about your examples, please. Hello, the first example. You could have passed the examination. You could have passed the examination in the first attempt. आप पहले अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर सकते थे. I could have played the piano yesterday. I could have played the piano yesterday in the party. मैं पार्टी में कल पियानो बजा सकती थी. I could have gotten extinction in the exam. I could have got extinction, not get. Could have के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. I could have got distinction in the examination. मैं examination में distinction हासिल कर सकती थी. Right? I could have moved abroad. You could have moved abroad. आप बैरून में जा सकती थी. इधर क्या कर रही हैं फिर? All right. I could have moved abroad. All right. G. I could have done it faster by myself. I could have Done it faster by myself. I could have done it faster by myself. बहुत शानदार सेंटेंसेस हैं आप सब लोगों के. मैं इसको ज्यादा तेजी के साथ खुद से कर सकती थी. सबके लिए क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज. बहुत बुखल से काम ले रहे हैं क्लैपिंग करने में आप. और जब आपने अच्छे सेंटेंसेस बनाए फिर ये भी क्लैप नहीं करेंगे. ऑलराइट जी, हमारे पास नेक्स्ट की वर्ड है might have. They might have planned and decided. Might भी सकता था, सकती थी, सकते थे, और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इसके बाद भी. लेकिन could में आप एबिलिटी लाते हैं और might में आप प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी लेकर आते हैं. मिसाल के तौर पर could have, मेरे पास एबिलिटी थी कि मैं ये काम कर सकता था. might have होता है कि ये इम्कान था कि ये काम हो सकता था. इम्कान था, इसमें इम्कान का इजहार होता है. मिसाल के तौर पर दे माइट हैव प्लान्ड, और माइट हैव है तो फिर थर्ड फॉर्म ही लगी इस्तेमाल होगी इसके अंदर. इसके बाद भी हैव के बाद दे माइट हैव प्लान्ड एंड डिसाइडेड. वो इम्कानी तौर पर प्लान करके डिसाइड कर सकते थे, फैसला कर सकते थे. सो लेट्स टॉक अबाउट सम मोर सेंटेंसेस. लेट्स टेक देयर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल माइटा का सेंटेंस प्लीज देख दीजिएगा. एक्सक्यूज मी. I might have left my phone at home. मैं अपना फोन घर में छोड़ सकता था या छोड़ सकती थी. इम्कान था जी. It might have rained today. It might have rained today. इम्कान है तो बारिश हो सकती थी जी. England might have won the match. England might have won the match. और इंग्लैंड ने तो मैच जीत ही लिया था. इंग्लैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया won the World Cup. So England might have won the match. इंग्लैंड इम्कानी तौर पर मैच जीत सकता था जी. They might have decided to cancel the trip. They might have Decided to cancel the trip.
They might have decided to cancel the trip. वो इम्कानी तौर पर फैसला कर सकते थे ट्रिप कैंसिल करने का. Right, great. Clapping for them, please. Okay, fine. Thank you. The third keyword is should have. Should have. चाहिए था. So, we should have invited all friends. हमें तमाम दोस्तों को दावत देनी चाहिए थी. We should have invited all friends. All right, please stop. Hello. I should have listened to my mother's advice. I should have listened to my mother's advice. मुझे अपनी माँ की नसीहत को सुनना चाहिए था. तो माँ की सुनते क्यों नहीं हो आप? शुड हैव के बाद शुड हैव में एक क्रिटिकल, आप किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं इनफैक्ट कि आपको ऐसे करना चाहिए था, मतलब वो किया नहीं आपने. जी. They should have taken breakfast together. They should have taken breakfast together. उन्हें इकट्ठे नाश्ता करना चाहिए था. जी. You should have replied to his letter. You should have replied to his letter. आपको उसके खत का जवाब देना चाहिए था. You should have reminded him. You should have reminded him. आपको उसको याद दहानी करवानी चाहिए थी. Lots of clapping for everybody. All right. हमारे पास should have के बाद next keyword आ गया जी. Must have. He must have bought the ticket. अब जो must है जरूर चुका होगा की सेंस बनती है प्रायोरिटी में इसकी. जरूर चुका होगा और would have चुका होगा. मस्ट है जरूर चुका होगा. ही मस्ट हैव बॉट द टिकट. वो टिकट जरूर खरीद चुका होगा. ही मस्ट हैव बॉट द टिकट. यस प्लीज. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज. Alex must have listened to her message. Alex must have listened to her message. Voice note. एलेक्स जरूर उसके मैसेज को सुन चुका होगा. शाबाश. He must have practiced very hard. He must have practiced very hard on the regular basis. वो रेगुलर बेसिस पे बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस कर चुका होगा. He must have ignored the message. Oh, he must have ignored the message. वो उस मैसेज को जरूर इग्नोर कर चुका होगा. Right? Sometimes इग्नोर भी करना जरूरी होता है. My father must have bought the car. My father must have bought the car. मेरा बाप जरूर गाड़ी खरीद चुका होगा. घर में बताया नहीं उन्होंने किसी को कि गाड़ी खरीद ली उन्होंने. Must have bought the car. All right. So clapping for these guys, please. All right. Last but not the least is going to be about would have. Would have चुका होगा. She would have fried the chicken. वो chicken fry कर चुकी होगी. She would have fried the chicken. Right, please. Hello. If I had seen the movie earlier. Sorry. If I had seen the movie earlier, I would have recommended it. Oh, ये मेरा ख्याल है आप कंडीशनल सेंटेंस बता रहे हैं. और ये कंडीशनल की थर्ड टाइप होती है. लास्ट टाइप कंडीशनल होती है. Would have had third form or would have third form. Right. If I had seen the movie earlier, I would have recommended it to everybody. शाबाश. अगर मैं मूवी पहले देख चुका होता तो मैं सबको रिकमेंड कर चुका होता. जी. He would have won the game if हाँ. he hadn't made that mistake. He would have won that game. वो उस गेम को जीत चुके होते. If he hadn't made that mistake, अगर उन्होंने वो गलती ना की होती. ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल है. जी प्लीज. If I knew you were sick, I would have been visited you in the hospital. I would have visited you in the hospital if I knew that you were sick. If I knew. ये भी हो सकता है. If I had known. ये थर्ड टाइप कंडीशनल है. तो आपने if I had known you were sick, I would have visited you in the hospital. शाबाश. तो अगर मुझे पता होता कि आप बीमार हैं तो मैं आपको हॉस्पिटल में विजिट कर चुका होता. जी लास्ट. I would have joined the party if I would know about you. If I had known about you, I would have joined the party if I had known about you. अगर मैं आपको जान चुका होता मैं आपके बारे में ज्वाइन कर चुका होता. Thank you very much indeed. That's with lots of prayers and blessings, everybody. You have given good sentences for the practice. Clapping for everybody, please. Thank you.